It's nothing to do with North India, South India, West India, East. It is, we are Indian. Think about our culture. Think about how advanced we were. We need to be proud of this. जब डबिंग में विक्रम सर भी बैठे थे हमारे साथ 3 दिन तक 8-8 9 9 घंटे. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. 9th century, all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. Basically, in a democratic India, where the focus is always on surging, looking to the future, and then obviously going back to history, what is there for the society to derive, by going back through history, through such films or, other forms of literature? See, everybody has interest. There will be people who like science, astronomy, geography, history. But I think the most important thing is history. As children, all of us have listened to stories of the past. Whether it's Chandamama, you have Chandamama in Hindi? Yes. Whatever. All those are stories we hear. We've been told stories about the past, about kings, we've had such an illustrious past. Just a small thing that I want to bring to your notice. We all talk about the pyramids and how could they have possibly built it? How did they do it so many years ago? But do you know that in India, we have so many temples, but the one with the highest Gopuram is there in Tanjavur, which is where the Chola dynasty had happened, and his role, Rajaraja Cholan, had built it. That particular temple has the highest Gopuram in the whole world. The top stone alone, it's a single stone that weighs 80 tons. 80 tons, not 1 ton or 2 tons. And how did they do it? But do we know that? We all go to the pyramids, we go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp, which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants, and people. 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? Without plaster. What they have done is they have an outer wall, then inside that they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor, and then they have another structure inside which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time, and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked them to name cities after women. Why should it only be men? Why can't it be named after a queen? And they've had hospitals, free hospitals, and and he actually brought loans. I mean, he used to give loans. He used to help people get dignity, not just throw money around. So this is something that's so illustrious. And this happened in the 9th century. I'm sorry I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today, the 9th century all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East. It is, we are Indians. And we need to feel proud about that. And England is so illustrious, but Englands were invaded by the Vikings, and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely. Thank you. Thank you. I need water, please. और पूरी टीम से है हिंदी अगर समझ रहे होंगे जो तो शायद बता सकते हैं वहाँ पे एक बहुत अलग चीज़ है जिस पे बात शायद अभी नहीं हुई, वो है डायलॉग. अगर तमिल में मूवी है और हिंदी में भी लोग इसे देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है वो है डायलॉग और राइटिंग. डायलॉग को किस हिसाब से रखा गया, क्योंकि हमारी हिंदी पट्टी में जो फिल्में बनती हैं, बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक फिल्में बनी हैं जो 1000 साल पूर्व और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी भर और बहुत सारे लोगों को उसके डायलॉग याद रह जाते हैं. जो अभी आप लोगों ने बोला एक दूसरे का डायलॉग, हिंदी फिल्मों के डायलॉग, तो कैसे राइटिंग में डायलॉग को लेकर के कैसे रिसर्च किया गया, ये मेरा सवाल है सबसे, खासकर मणिरत्नम सर से. Divya, please come.
डायलॉग के लिए जब मैं मनी सरगा के ऑफिस से कॉल आया था, तो मैं थोड़ा कहानी की तरह बताता हूँ ताकि वो लगे कि कहानी कैसे बनी इसकी। तो मैं बहुत डरा हुआ था, पहले तो मुझे लगा फेक कॉलेज जैसे आजकल आता है दुनिया भर का। तो वहाँ पहुँचा मैं और फिर लगा कि हाँ ये रियल है, टिकट विकट आ गया। जब पहुँचे तो जब मनी सर से मिला, और तो क्या होता है कि जब मनी सर से पहली बार आप मिलो ना तो ब्लैंक हो जाता है सब, पीछे दिल से दिखाई पड़ रही होती है, बॉम्बे दिख रही होती है। तो मैं महाभारत जो थी, जो सीरियल था, राही मासूम रज़ा साहब ने उसके डायलॉग लिखे थे, तो उसका मेरे पास स्क्रिप्ट थी, वो मैं रिसर्च करके ले गया था। मैं बुक ऑलमोस्ट पढ़ के गया था पूरी की पूरी। तो कोशिश ये रही, सर ने बोला कि इट इज़ अ हिंदी फिल्म, आप इसको ऐसे ही देखिए और हिंदी फिल्म की तरह करिए। और वहाँ पे कोशिश ये रही कि जो भूले बिसरे शब्द हैं, जैसे कि गुप्तचर जैसा शब्द है, हम अंगूठी बोलते हैं, मुद्रिका जैसा शब्द है, कहीं पे किसी को रिक्वेस्ट करना है तो अनुरोध जैसा शब्द है, और उनको ऐसे लाया जाए कि वो टीवी सीरियल जैसे ना लगे, वो लगे कि हम 10वीं शताब्दी में पहुंच के, क्योंकि वहाँ की भाषा तो हम पकड़ नहीं सकते थे, तो हम 10वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं और यहाँ से एक हिंदी फिल्म की तरह उसको देख रहे हैं। तो कोशिश ये रही कि जो आज 20 साल का लड़का है, उनके जब राही साहब ने लिखा था महाभारत, तो पिताश्री माताश्री लोग बात करने लगे थे, अरे पिताश्री नहीं मानेंगे, माताश्री नहीं मानेंगी। तो हम लोगों ने कुछ वैसी कोशिश की है कि पॉपुलर कल्चर में वो शब्द, कुछ डायलॉग इसके चले जाएं। अब वो कैसे जाएंगे वो तो फिल्म देख के पता चलेगा, लेकिन कोशिश पूरी रही है। और जिस तरीके से उसको किया गया है, आई एम श्योर आप लोगों को कुछ नई बातें हिंदी को लेके मिलेंगी। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मैं पब्लिकली कभी नहीं दे पाया सब लोगों को। और मतलब एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग टाइम, कि एक जब डबिंग में विक्रम सर भी बैठे थे हमारे साथ 3 दिन तक, 8-8, 9-9 घंटे, और उसमें एक जगह ऐसे था, एक एक्टर करता है ऐसा ऐसा ना, घूम के ऐसे, इसके कोई भी जो टेक लेगा 10 ले लेगा, 8 ले लेगा, 5 ले लेगा। हम लोगों ने इसके 50 से ज़्यादा टेक इसके लिए। तो आप सोचिए डायलॉग में हमने कितनी मेहनत की होगी। 100-100, 150-150 टेक के बाद हमने एक एक डायलॉग को फिट किया है, बैठाया है वहाँ पे। तो आई एम श्योर वो मेहनत आप लोगों को दिखेगी। और बहुत बहुत मैम, मैं नहीं इतने लोग हैं, मेरे को आप पूछ के शर्मिंदा ना करें प्लीज़। मैम पहले तो मैं जैसे ये दोनों भाषाएं मैं पहले तो अलग नहीं मानता, पहली चीज़। दूसरे, आप जब देखेंगे तो आपको वो बिल्कुल वैसा, जो उस समय के जो शब्द आपको उर्दू दां उसमें नहीं दिखाई पड़े, नहीं सुनाई पड़ेंगे। वो कोशिश पूरी की पूरी की गई है कॉन्शियस। लेकिन हम भाषाएं अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम इतिहास को नहीं अलग कर सकते ना, हमारी कहानी है। तो हमने उसको पूरी कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी से हिंदी को बरता जाए, और वो आपको भाई लास्ट तो मैं थैंक यू बोलूंगा थैंक ना? यू थैंक यू। All right, that's all we have for you. You guys have been awesomeness. Give yourselves a